Yeah, good morning all. Yeah, thanks Vishal for confirmation. Okay, so first of all, what we'll do a recap कि हमने कल क्या क्या cover किया है, ठीक है? Then today mostly हम practical देखेंगे. So whatever we have learned yesterday, we'll try to understand that practically, ठीक है? कि भी Spark कैसे add करते हैं existing cluster में, ठीक है? What are the major component of that Spark? Right? Then we'll go through the Spark history server and important configuration and parameters. Okay. Yeah, Pradeep. Okay. So first of all, हमने कल देखा कि what is Spark. Spark is nothing but is like in-memory processing engine. ठीक है. So in-memory processing, why it is called? Because first of all, हमने देखा कि what is processing. Processing means trying to fetch some meaningful data from the like millions or billions of records for the forecast of the business. ठीक है. फिर that's the processing. Then why we call it Spark as a real-time processing or in-memory processing? Because वो memory use करता है for its processing all the calculation instead of disk. That's why it is called as a in-memory processing engine. ठीक है. उसके बाद then हमने देखा है कि that's our agenda. Can skip that. Then we see that what are the different version and the little history about the Spark. So अभी latest market में Spark का 3.3 वर्जन है, ठीक है. And we then checked that Spark is written in Scala and it's a master slave architecture. Basically master में driver होता है and in slave there are multiple executors. Then हमने देखा कि framework Spark core होता है. framework में Spark core में हमें Scala, Python and Java some of the basic languages support करता है. Then apart from there are some of the add-on libraries जैसे Spark SQL हो जाए, machine learning या graphics या streaming Spark streaming हो जाए, ये add-on libraries है, ठीक है. फिर हमने देखा कि as a resource management layer में हम there are 3 different layers you can use: Yarn, Mesos, Spark scheduler. Okay, and then there are it support different storage system. ठीक है. बेसिकली हमने यहाँ पर ज्यादातर हमारा मेन फोकस हुआ था Spark और Yarn, ठीक है, क्योंकि most of the organization use Spark along with Yarn instead of Mesos or Spark standalone. या प्रशांत DAG and RDD फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है. सो हमने देखा कि तो हमारा जो Spark का ड्राइवर है हमारे Yarn के एप्लीकेशन मास्टर में लॉन्च होता है, वहीं पे हमारा Spark कंटेक्स्ट लॉन्च होता है. सो Spark ड्राइवर इज सिमिलर टू और वी कैन से इक्वल टू Yarn एप्लीकेशन मास्टर. जैसे कि हमारे Yarn में एप्लीकेशन मास्टर होता है, सारी एप्लीकेशन फ्लो वो इंचार्ज करता है और कंट्रोल करता है. सेम वे में Spark में भी Spark ड्राइवर क्या करता है, Spark एप्लीकेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है. फिर यहाँ पर हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट लेयर होता है, चाहे Spark स्टैंडअलोन हो, Mesos हो या फिर Kubernetes भी हो. तो हमारे केस में Spark Yarn कंसीडर करके हमने देखा कि जैसे कि हमारे Yarn नोड मैनेजर्स होते हैं, वहां पर कंटेनर में हमारे Spark एग्जीक्यूटर्स लॉन्च होते हैं और उस एग्जीक्यूटर्स में टास्क लॉन्च होते हैं और टास्क रन होते हैं, ठीक है. दैट्स हमने ये देखा. के बाद हमने समझा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन Yarn क्लस्टर मोड एंड द क्लाइंट मोड. क्लाइंट मोड में बेसिकली क्या होता है, जो ड्राइवर होता है वो क्लाइंट मशीन पे लॉन्च होता है और क्लस्टर मोड में कहीं पे भी क्लस्टर में लॉन्च हो सकता है. दैट्स अ वेरी वेरी बेसिक डिफरेंस कि बस ड्राइवर कहाँ लॉन्च होता है उसके उस पर डिपेंड करता है कि वेदर इट इज अ क्लस्टर मोड और क्लाइंट मोड, ठीक है. तो जैसे क्लाइंट मोड में ड्राइवर लॉन्च होता है क्लाइंट मशीन पर और इट इज यूज फॉर अ टेस्टिंग पर्पस ओनली और स्टेजिंग और डेमो पर्पस, बट इन अ प्रोडक्शन इट इज रिकमेंडेड टू यूज द Yarn क्लस्टर मोड. ओके, के बाद हमने कवर किया different APIs supported by the Spark. So very basic first was RDD, ठीक है. उसके बाद फिर डेटा फ्रेम लॉन्च हुआ, फिर डेटा सेट हुआ, ठीक है. So RDD के बेसिस पे बाकी डेटा फ्रेम बना है, डेटा सेट बना है, ठीक है. So depends आप किस लैंग्वेज से डील कर रहे हो, whether you are dealing with Spark, SQL, ML, okay. Sorry. So depends which language you are using. You can use data set, data frame or RDD, ठीक है. So basically RDD is the building blocks of the any Spark APIs you can say. So we try to understand the what is RDD. One second, Imran. So Imran, so in memory processing in one line, what is can say in memory, like it uses the memory. Like देखिए
देर आर हमारे पास दो रिसोर्सेस है, एक डिस्क और एक मेमोरी, ठीक है। नॉर्मल जो मैप रेडियस जो काम करता है ना, तो कोई भी प्रोसेसिंग करने के लिए वो डिस्क यूज करता है, मतलब उसको रफ स्केच, जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई कैलकुलेशन करना है, जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था कि अगर मुझे कुछ रफ कैलकुलेशन करना है या मैथमेटिक्स कोई करना है, तो मैं पेन पेपर लूंगा, फिर उस पर कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है। तो इट विल टेक टाइम, सो इन taking a rough page, it's a kind of disk, okay, so doing the calculation on disk is a kind of what is it, मैप रिड्यूस, ठीक है। अब मान लीजिए मैं पेन पेपर यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ऑल द कैलकुलेशन डूइंग इन माय माइंड इटसेल्फ, ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ मेमोरी। सो आप माइंड में अगर कैलकुलेशन करते हो तो इट विल बी फास्ट एज कम्पेयर टू डूइंग कैलकुलेशन ऑन पेन पेपर, डूइंग यूजिंग अ रफ पेपर, ओके। तो सेम वे स्पार्क मेमोरी यूज करता है और मेमोरी में प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। सो हमने फिर आरडीडी देखा है, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आरडीडी। आरडीडी नथिंग बट लाइक मूविंग डेटा फ्रॉम योर डिस्क, वेदर डेटा स्टोर्ड ऑन एचडीएफएस, एस3 या फिर कैसेंड्रा या आरडीबीएमएस, कहीं भी डेटा स्टोर हो, वहां से अगर वो डेटा जब रैम पर लाया जाता है, ठीक है, और कलेक्शन ऑफ डेटा इट इज कॉल्ड एज अ आरडीडी, ठीक है। तो हमने इन टर्म्स ऑफ एचडीएफएस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे एचडीएफएस में क्या होता है कि ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक 1 2 3, ठीक है, अप टू एन ब्लॉक्स। सो जब हम आरडीडी क्रिएट करते हैं तो या सो हम जब आरडीडी क्रिएट करते हैं तो डेटा मूव होता है डिस्क से रैम पर, ठीक है। सो स्पार्क रिफर दैट chunk of data as a partition, so partition 1 partition 2, okay, so all this collection of partition is nothing but a RDD, ठीक है। इन केस ऑफ HDFS हमारे पास ब्लॉकिंग सिस्टम है, हमने ये भी देखा कि सब जो मान लीजिए कोई स्टोरेज सिस्टम है जहां पर ब्लॉकिंग सिस्टम नहीं है, in that case as well, Spark has own mechanism where it do the like chunking or what is say like doing a partition of data, और उसको डेटा को डिवाइड करता है और referred it as a partition, and collection of that partition is called as nothing but a RDD, ठीक है। के बाद then we see we try to understand the DAG nothing but it's like application flow, it's like kind of fancy way to say like what how the application flow in the Spark, okay। so हमारे पास जैसे कि yarn application flow है, जैसे कि first of all application master launch होता है in container 0, then the application master negotiate the resources with the resource manager, okay। सेम वे में यहाँ पर भी DAG में क्या वही वही होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि एप्लीकेशन मास्टर में ड्राइवर लॉन्च होता है, फिर देन ड्राइवर नेगोशिएट द रिसोर्सेज, देन इट विल लॉन्च द एग्जीक्यूटर्स। यहाँ पर क्या होता है कि स्पार्क एप्लीकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब्स क्रिएट होते हैं, inside jobs there will be multiple stages, and inside that stages there will be multiple tasks, so actual जो operation है or we can say the calculation will be happen in the tasks, okay। then यहाँ पर हमने देखा, इसके बाद हमने देखा कि व्हाट आर द सम बेसिक लाइक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ स्पार्क। तो जैसे फ्यू ऑफ देम देयर आर मेनी, बट हमने बताया कि देखा कि व्हाट आर द स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन, कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजर, पर्सिस्टिंग एंड कैशिंग, इट्स रिलेटेड टू आरडीडी, ओके। आप अगर आरडीडी आपका परमानेंट सेव करना चाहते हैं, देन देयर इज अ मैकेनिज्म कॉल्ड persisting, and if you wanted to save your RDD temporary, there is a mechanism called caching, then stream we have checked the concept check pointing, then shuffling मतलब डेटा जब मूव होता है वन नोड टू अनदर, दैट्स कॉल्ड एज शफलिंग। एंड ये हमने लाइक वी हैव डिस्कस दैट शफलिंग शुड बी मिनिमम टू लाइक improve the performance of any Spark application, ठीक है। के बाद या सो टुडे विल कवर लाइक Spark installation and its web UI and its important configuration and troubleshooting, ठीक है। Yep. Let me go check few of the things. Yeah, Prashant is asking, we are creating RDD or it's create automatically when we job run. So Prashant, yeah, so जब हम कोड लिखते हैं ना, तो that at that time RDD was created कि आपने मान लीजिए कोड लिखा या डेवलपर ने कोड लिखा है कि उसे पर्टिकुलर डेटा रीड करना है, और उसमें so that particular when he मेंशन करता है ना कि ये डेटा रीड करना है या इस लोकेशन से डेटा रीड करना है, at that time Spark itself create the RDD. So it's व्हाट डू यू से
जैसे मैकेनिज्म, कोडिंग मैकेनिज्म, जहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि कौन सा डेटा रीड करना है। मान लीजिए जैसे मैंने कल बताया था सीक्वल में, अगर आप कोई डेटाबेस और टेबल मेंशन कर रहे हो तो स्पार्क उस टेबल का आरडीडी बनाता है एंड इट विल प्रोसेस द डेटा। ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। एक्चुअली वी आर वेटिंग फॉर स्पार्क क्लस्टर। Let me check is there anyone from CloudAge team is available. We are waiting for the cluster now. Abu sir, are you there? Guys, wait, just I will check with the CloudAge team. Okay, we need a cluster to to start. Okay, installation. Just give me a couple of seconds. I will check and come back. Yeah, we have one question while we wait for the cluster. Prashant is asking, what is the execution engine in Spark? So Prashant, Spark itself is an execution engine. ठीक है ना? Spark में कोई execution engine नहीं है. Spark itself is an execution engine. Okay. So जैसा कि Hive में होता है कि Hive में in Hive there are Spark itself is execution engine and MapReduce you can use the as execution engine as well. Okay. So basically of execution engine where we can use the MapReduce, we can use the Taze as well as the Spark. Okay. So if you have worked or deployed Hortonworks cluster, तो वहाँ पर ना Taze होता है with the Spark. Okay. Yeah, Prashant. Sorry. So what I was telling that Spark itself is an execution engine. ठीक है. So Spark में कोई execution processing engine नहीं होता है. Spark itself a processing engine and Hive में processing engine होता है. Hive में like internally तीन टाइप के execution engine होते हैं. MapReduce होता है, Taze होता है, and as well as you can use the Spark as well, or Spark as well. Okay. Guys, just let me check here. No one. Actually, we are waiting for the cluster from. We need a plain cluster so that we can add a service, Spark as a service there. Let me check one second. Is there anyone in this meeting from CloudAge admin team? Yeah, guys. So just had word with this CloudAge admin team. Cluster ready नहीं है. So maybe I think शायद practical नहीं होगा. Okay, leave it. I'll walk you through the slides. Okay. Okay, Rohit is asking few of the questions. Okay, Rohit is asking what should we use, Spark or MapReduce? But obviously, like Rohit, nowadays everyone is using Spark. Okay, so MapReduce is rarely used. Okay, so mostly organization prefer to use the Spark over the MapReduce. Okay. Sheikh Bilal is asking Spark कहाँ use होता है, like Spark with Hadoop. So Spark nowadays is using with Hadoop as well as standalone as well. मतलब apart from Hadoop भी use होता है. जैसे कि हमने बताया कि AWS Glue or Databricks, they have like they don't use the Hadoop. They have standalone Spark. Okay, so that's the thing. Spark real-time issues. Yeah, UB like we'll cover the. We plan to cover the real-time issues while deploying the cluster and while submitting the demo job, but unfortunately the cluster is not ready. Okay, no issues. I will walk you through the slides. Okay. Okay. So what we plan to cover is सबसे पहले हम क्या करने वाले थे कि हम Spark as a service ऐड करने वाले थे. Like consider कि हमारे पास existing Spark cluster है जहाँ पर some of the basic services like HDFS, Yarn, Hive, ठीक है, ऐसे services है. Then वहाँ पर हम क्या करेंगे कि Spark service ऐड करेंगे. So earlier क्या होता था कि जब CDH 5.14 उस पर अराउंड दैट उस पर हम काम करते थे ना, तो वी वेर नॉट एबल टू ऐड स्पार्क डायरेक्टली एज अ सर्विस. तो हमें क्या करना पड़ता, CDH टावरबॉल कॉन्फ़िगर करना पड़ता था कि उसके CDH के पार्सल रिपोजिटरी में स्पार्क पहले कॉन्फ़िगर करना होता था. उसके बाद देन ऑप्शन आता था कि यू कैन ऐड स्पार्क एज अ सर्विस. बट आफ्टर CDH 6 and इन CDP 7 कि आपको डायरेक्टली स्पार्क यू कैन ऐड एज अ सर्विस. ठीक है. सो उसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मल यू माइट हैव वर्क, जैसे कि हम कोई भी सर्विस ऐड करते हैं तो सेम वे में आपको क्या करना होता है कि क्लाउड मैनेजर में सर्विसेज में जाके ऐड सर्विस करना होता है. ठीक है. ऐड सर्विस में जैसे अब स्पार्क सेलेक्ट करोगे
आपको रोल असाइन करने होते हैं। तो बेसिकली वहां पर आपको सिर्फ दो रोल्स दिखते हैं, एक हिस्ट्री सर्वर एंड गेटवे, ठीक है। तो हिस्ट्री सर्वर एक यू कैन select one of the master node or any node where you wanted to deploy your history server, and then gateway machines. So Spark gateway you can add on a edge node, ठीक है। उसके बाद some of the like manual step where you need to just click. So इंटरनली ये कैसे करता है, जैसे कि नॉर्मल सर्विसेज इंस्टॉल करने के लिए इसके टॉरबॉट डाउनलोड करता है, इंस्टॉल करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो सब ये सब इंटरनली टेकन केयर बाय द क्लाउड मैनेजर, ठीक है। उसके बाद then I was about to cover different interfaces in the sense like कि यूजर कैसे स्पार्क से इंटरेक्ट कर सकते हैं, how like so the basically there are two ways like CLI, जैसे कि CLI में आता है आपका स्पार्क सबमिट बाय स्पार्क, ठीक है। ये CLI अप्रोचेस आता है। रेस्ट APIs पे क्या होता है कि यू कैन इंटरेक्ट विद द स्पार्क और फ्रॉम द ब्राउजर एज वेल, जैसे जेपलिन हो गया, जुपिटर नोटबुक हो गया। सो दीज आर द सम ऑफ द रेस्ट APIs जहां से आप क्या कर सकते हो, आप इंटीग्रेट कर सकते हो आपका जेपलिन जुपिटर नोटबुक विथ योर स्पार्क, एंड यू कैन फ्रॉम ब्राउजर इटसेल्फ यू कैन कनेक्ट टू योर स्पार्क एंड सबमिट योर स्पार्क एप्लीकेशन, ठीक है। देन स्पार्क वेब यूआई में हम क्या कवर करने वाले थे कि बेसिकली जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है स्पार्क वेब यूआई का 18081 होता है। तो इट्स डिफॉल्ट बट यू कैन कस्टमाइज एज नॉर्मल, जैसे हम दूसरे पोर्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, सेम वे में स्पार्क हिस्ट्री सर्वर का भी पोर्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो वेब यूआई में आपकी ना ये सम ऑफ द बेसिक टैब्स हैं, यहाँ पे जॉब, स्टेजेस, स्टोरेज, इन्वायरमेंट एंड एग्जीक्यूटर्स ऐसे टैब दिखते हैं, ठीक है। सो और अपार्ट फ्रॉम दैट स्पार्क कंटेक्स्ट का एक पोर्ट होता है जहाँ पे जब व्हेन यू लॉन्च द स्पार्क सेशन वेरी फर्स्ट टाइम इट विल क्रिएट द स्पार्क कंटेक्स्ट एंड ट्राई टू बाइंड विथ वन ऑफ द पोर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 4040, ठीक है। तो मान लीजिए एक यूजर ने आपके स्पार्क एप्लीकेशन लॉन्च किया, ठीक है। तो सबसे पहले पोर्ट वो इट विल असाइन 40440, ठीक है। अब मान लीजिए आपके सेकेंड यूजर ने अगर स्पार्क एप्लीकेशन लॉन्च किया, then it will connect to the port 4041. So on it will keep binding the port with the series 4041, 4042 and so on, ठीक है। ठीक है, we'll cover your question at the end, okay? Just I'm going to the points now, okay? So उसके बाद हम देखने वाले थे कि what are the like important configuration related to Spark history server, ठीक है। Spark history server में क्या होता है कि by default you can enable or disable it. ये if you can see very first spark.event-log.enable, okay, this is the configuration. आप इसे अगर ट्रू और फॉल्स सेट कर सकते हो। अगर आपने ट्रू किया तो स्पार्क हिस्ट्री सर्वर will be enabled, okay? If you set this as a false, spark history server will be disabled, ठीक है। So basically by default it is enabled, but in some of the cases if you are not able to access your Spark web UI, then you can control the or you can check this configuration, ठीक है। So you can add one of this configuration as a real-time issue that your Spark web UI was not accessible to user, okay? तो वहां पे आप देख सकते हो कि ये configuration was disabled, ठीक है। But basically this issue should happen in a new cluster only, because once the cluster is ready कोई भी ये configuration change नहीं करता है, ठीक है। उसके apart from that there are some directories कहाँ पर जहाँ पे आप Spark history store the like all the applications, okay? So store the like you should define the location where you wanted to store all this application details. So you with the help of this configuration spark.event-log.directory आप डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बेसिकली SDFS पाथ देना होता है। तो बेसिकली पाथ क्या होता है, /user/spark, okay, /spark application. So उस inside that directory there will be multiple application directory, and that inside that application there will be logs, ठीक है। So as a you can define, so you can customize it as per your requirement and or it will take as a default. देन आपके रोलिंग मैकेनिज्म के लिए होता है। रोलिंग इन द सेंस लाइक मान लीजिए यू कैन डिफाइन कि आपकी एक लॉग डायरेक्टरी कितनी साइज की होनी चाहिए, ठीक है। सो यू कैन कंसिडर ऑल दिस थिंग्स यूजिंग दिस स्पार्क इवेंट लॉग डायरेक्टरी डॉट रोलिंग डॉट इनेबल डॉट रोलिंग डॉट मैक्सिमम फाइल साइज, ठीक है। तो बेसिकली ये ना
प्रैक्टिकल पार्ट है, थ्योरी में यू विल नॉट गेट मच, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड बिकॉज आप अपने पास अभी क्लस्टर है नहीं, so as much as you can understand, just try to get it. Okay, then there are some important configuration जहाँ पे सबसे one second, ठीक है. So yeah, I was telling about the some of the important configuration. So configuration में क्या होता है कि सबसे पहले ड्राइवर एंड एग्जीक्यूटर की जो configuration होती है वो बहुत important होती है in terms of performance tuning. ठीक है. So first of all, you can remember spark.driver.course, spark.driver.memory. ठीक है. तो फर्स्ट कॉन्फ़िगर driver.course से हम उसके सीपीयू कंट्रोल करते हैं, driver.memory से हम ड्राइवर की मेमोरी कंट्रोल करते हैं. सेम वे में वी कैन कंट्रोल द एग्जीक्यूटर मेमोरी एज वेल एज द एग्जीक्यूटर कोर. ठीक है. तो executor.memory, executor.core. ठीक है. Then we have dynamic allocation. Okay, so dynamic allocation में क्या होता है कि रन टाइम पे आप like Spark application can increase or decrease the what we say the number of executors. ठीक है. So अब मान लीजिए आपको you have defined the if you have enabled the dynamic allocation. ठीक है. Then there is a set, आप सेट कर सकते हो कि मिनिमम कितने चाहिए, मैक्सिमम कितने चाहिए, और यू कैन सेट द एज ए लिमिट. ओके, सो मान लीजिए आपने डायनेमिक एलोकेशन मिनिमम एग्जीक्यूटर्स आपने सेट किया 10, ओके, एंड मैक्सिमम आपने सेट किया 20. सो इन बिटवीन 10 and 20 your number of executors will be launched, like will be assigned to your application at the run time. ठीक है. उसके बाद होता है पैरेललिज्म कि पैरेलल कितने टास्क you wanted to run in any application. ठीक है. Then we have event log, ये वाला हमने देख लिया है, event log वाला. Then Spark UI port, जहाँ मैं जैसे देखिए custom port you can do it. So using this spark.history.ui port you can control the custom port for your Spark history server as well. And some of this Spark.history, this cleaner interval, cleaner.max age, cleaner.max number, these are related to the Spark history server only. कि आपको अगर क्लीन करना है आपका हिस्ट्री सर्वर, तो आप यू कैन मेंशन दैट कि कितनी एज के बाद, कितने दिन के बाद आपको कंट्रोल करना है, या फिर कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के बाद आपको स्पार्क हिस्ट्री क्लियर करना है. सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन कंट्रोल दिस यूजिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. ठीक है. सो देयर आर डिफरेंट वेज टू कंट्रोल द स्पार्क कॉन्फ़िगरेशन. जैसे कि कल मैंने बताया कि there are basically three different ways you can pass you can control the configuration using the argument, using the configuration property as well as the environment variable. ठीक है. तो argument में क्या होता है कि आप मान लीजिए, let me share my screen. क्या प्रसाद, हमारे पास में अभी क्लस्टर नहीं है, that's why we are not able to show because cluster is not ready. Because have ready cluster. Okay, because do you have a cluster ready? Can you share the details? Yeah. So yeah, because can you just share me just ping me that cluster details? That will be very helpful, I believe. But screen sharing, I think Amit, you will not have the access. Let me, but can you give me the cluster details? अगर आप मुझे cluster details दे दोगे ना, तो I can control it from here. ठीक है ना? So because अगर आप screen share करोगे तो it will take time कि आपको बताते रहूं कि go there, go here. So it will take time. बस मुझे IPs दे देना cluster की and username और password बता देना. Then I will try to access. Okay. So meanwhile विकास share ना, I will go to this PPT. So क्या होता है कि there are three ways. ठीक है. So एक तो होता है argument pass करते हैं. तो argument में क्या होता है कि you can do it using this hyphen parameter. So let me show you this on notepad. Is my notepad visible, guys? Okay, thanks. So यहाँ पर ना ये देखिए, like consider I am submitting a Spark submit. Okay, so with the help of Spark submit command, I am submitting a application. ठीक है. This was a test job जो हम आज submit करने वाले थे. So ये मेरे Spark Py job है. ठीक है. So now I am controlling the parameter. So master क्या होगा, हमारा yarn client mode होगा. ठीक है. नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर कितने होंगे, एक होंगे. ड्राइवर मेमोरी कितनी होगी, 712 MB. सो लाइक दैट आई वाज कंट्रोलिंग दिस पैरामीटर. सो ये दिस इज द दिस हाइफन एग्जीक्यूटर मेमोरी, हाइफन ड्राइवर मेमोरी.
ये it's nothing but this argument. Okay, so I'm controlling this configuration with the help of argument along with at the time of while I'm submitting the job. Okay, this is the one of the a way to control your Spark configuration. Okay, then other ways. Okay, so for this is the first one is argument. Okay, now next one is the configuration property कि आप जैसे कि you can control with that index inside your configuration file that is spark.master spark. ये the normal way जैसे हम we do it from the cluster or from yarn. Okay, so जहाँ पे change करते हैं then we can control. This is the normal approach. One is the variable. So आप जैसे कि हम हमारे CLI पे okay, so what we do is we set spark hadoop, what we say set hadoop home, okay, set java home. Okay, so in this way we can set the environment variable as well. ठीक है, so अब like consider आपने तीनों जगह पे सेट किया, मान लीजिए आपने एग्जीक्यूटर मेमोरी आर्ग्यूमेंट में भी पास किया, आपने कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी सॉरी configuration may be passed here, and as well as you have set it at the environment level as well. So out of these three, which one it will pick? So, okay, so now there is a hierarchy. Okay, so you will understand the hierarchy in the next slide. Wait, a few of the thing. Okay, because just let me know once you are able to share the IP. Okay, I will check. Okay, so यहाँ पर क्या होता है कि Spark configuration में एक हायरार्की होती है, तो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस दिया जाता है यूजर कोड को. मान लीजिए आपकी यूजर लेवल पे भी, यूजर कोड लेवल पे भी एक Spark configuration we can define. So if you can see here at the very third line, okay, of the code, spark dot configuration const dot set. Okay, inside that there is a spark dot executor dot memory equal to 3G, it means 3GB. ठीक है, तो ये हायर प्रेसिडेंस है, मतलब सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इसको दिया जाता है. अगर मान लीजिए आपने कॉन्फ़िगरेशन में भी दिया है और आपने you have passed from the argument as well, but you have defined in the code as well, so highest preference will be given to the code. So you can relate it like in terms of real time issues. मान लीजिए अब क्या हो रहा है कि यूजर ने पोर्ट इज 7180, right? Yeah, what's admin, right? Password. Yeah, it's accessible. Thanks, because I'll share my screen now. 1 second. Is my screen visible, guys? This cluster. Yes. Thanks. Yeah, because thank you so much. So we'll let this. We'll start from back. Okay. So यहाँ पर हम ना we'll add Spark as a service. ठीक है. So मान लीजिए आपको एक यहाँ पे यह एग्जिस्टिंग क्लस्टर, ठीक है. सो आप इस क्लस्टर में आपके बेसिक सर्विसेज है HDFS, YARN, HYPE. ओके, नाउ you wanted to add a Spark. Okay, so what you will do, go to add services with this, yeah, add services, and here you will be able to see the Spark. ठीक है, the same way will be applicable in the CDP as well. So earlier, like in previous version, there was no direct option to add this Spark as a service. So, but in the latest version, you can directly add. Okay. So जैसे मैंने बताया कि there are basically two services, or we can say the roles you need to assign while deploying the Spark. One is Spark history server, other one is a gateway. ठीक है. So हम gateway सारे machine पे तो नहीं रखते. We'll select one of them as a gateway. So let's select. Okay, this CM machine पे हम gateway रख देते हैं as of now. ठीक है. So ठीक है, एंड हमारा हिस्ट्री सर्वर जो होगा ये नेम नोड वाले मशीन मास्टर मशीन पे होगा. ठीक है. सो इन द
This in this way you can just select the roles where in which node you wanted to assign. Okay. Then next, assign roles. So this is the configuration related to TLS and SSL. So as of now we can skip it. So mostly मैंने नहीं देखा कि SSL and TLS are enabled for the Spark history servers. Okay. So for this session just we can skip it. Okay. So if you can see the steps here, what its performance. So जैसे कि other services के लिए करता है, it will download the like tarball of the Spark. Okay, then it will distribute and assign the roles. All this application, create the users for it. All these internal steps required to deploy the Spark application, it Cloud manager will take care. Okay, and after that, just to restart the sales services. And deploy the client configuration. Okay. So yeah, so यहाँ पर we'll discuss about the different user interfaces. Okay, is my presentation also visible, right? Yeah, okay. So yeah, so user interfaces में हम CLI वाला approach देखेंगे. REST APIs we need to install the Jupyter or Zeppelin. So as of now it's beyond this session. So हम just CLI पे देखते हैं, ठीक है? So same way we can do it from the REST API as well, but हम यहाँ पर सिर्फ CLI से देखते हैं, ठीक है? Now let's try to connect to machine. I need now key. Lucas, can you share the key as well? Yeah, yes, Sheikh, that's correct. We require the gateway like to communicate with the Spark. Okay, so if possible, I will try to show what will happen if you try to application where a gateway is not uh, uh, installed. Okay. Yeah, Prashant, you can use the gateway on every data node, but it's not recommended because we do like users directly don't connect to data node in any production environment, or you can say that in enterprise or organization एक ही मशीन है, एक से दो मशीन होता है जहां से सारे यूजर्स कनेक्ट होते हैं और डायरेक्टली डेटा नोड को यूजर्स कनेक्ट नहीं होते, इसलिए डेटा नोड्स पे हम गेटवे मशीन नहीं रखते हैं. ओके, बट यू कैन यूज इट. ओके, विकास आप मुझे ये की दे सकते हो क्या, सो दैट आई कैन कनेक्ट टू this host which where let me check which IP is where we install this Spark gateway. Yeah, ये वाला पे 10.0.10.3 वाला जो है ना, इसका मुझे अब अगर या थैंक्स की दोगे ना. ओके, थैंक्स गॉड. एक्स्ट्रा yeah, I need to convert in PPK. Wait a second there. Yeah, Pratimesh, we are learning Spark on Yarn only. Okay, so because most of the organization uses Spark on Yarn, so we are going through the Spark on Yarn only. Okay. Wait, guys, I need to just change this PEM file to PPK.
विकास मुझे आप आईपी पिंग करोगे क्या जब तक उस सर्वर का पब्लिक आईपी जिस 10.3 वाला Yeah, thanks Vikas. Let me just try with that. Okay. User is CentOS, right? Okay, got it. Okay, thank you, Vikas. Thank you so much. So let me just increase the font size. Okay, hope the screen also visible, right? Okay. Yes, yes. Okay, thanks. Thank you, Vikas. Thank you so much. So let's get started. So मैंने जैसे बताया कि we have connected to our one of the machine. Now consider this is as our Spark edge node. Okay, or we can say the edge node in our cluster where we have installed our Spark gateway machine. Okay. Now what we'll do, we'll try to submit a Spark demo application. Okay. So we'll see this Spark VPI once we submitted. This will see this configuration as well and this all this. Okay. So first of all, let me try to just submit a demo job. So here I have. So let's try to first connect to Spark shell. So there are two ways. Okay, there in CLI also there is interactive shell and non-interactive shell. Okay, so in the interview it may ask you what is the interactive shell and non-interactive shell in Spark. Okay, so non-interactive shells are like Spark Spark submit. Okay, Spark submit is a non-interactive shell because you don't interact with the Spark shell directly. You submit your code. Okay, but in what is a Spark shell or Spark is the interactive shell where you interact with the Spark. Okay, आप एक line of code लिखते हो, then you uh, submit your code. Okay, so it's a two-way communication with the users and the Spark. Okay, so that is why it is called as an interactive shell. So Spark shell, Spark, okay, Spark SQL, all these are the called as a interactive shell, and Spark submit is a non-interactive shell. Okay, so we got one error, so it's good. Let's try to troubleshoot it. Okay. Okay, so what we got the error here. Yeah, so user CentOS. Okay, permission error. Okay, so while we are facing this errors, you can note it down. Okay, maybe you can mention it in your real time as well. Okay, I will try to copy paste an error. Okay, so very first error is user CentOS don't have the permission. You can see. Okay, so user CentOS, okay, is trying to access, get the right permission
on the inode on the HDFS user, ठीक है. So this CentOS is a Linux user, ठीक है, और ये ट्राई कर रहा है HDFS को एक्सेस करने को, ठीक है. So that's why it's not able to access HDFS. So what we need to do, either we need to switch the user which has the permission on HDFS, or we need to create a CentOS user on HDFS, ठीक है. Both of the approaches will work. ठीक है. So what we'll do, we'll switch to HDFS user. So I'm expecting all these issues so that we can resolve it. Okay. So this account is not available. I think we need to configure the bash for it. 1 second. We need to enable bash for HDFS user. Okay. For this error, I can copy this. You can note it down this way as well. Okay, first of all, we'll check whether the user HDFS is present or not. Okay, from the cat etc passwords, you might aware this is a like directory where you can see all the users. Okay. And let me filter out with the grep HDFS. Yeah, HDFS user is there. Okay, so there are two ways. आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक ये होता है कि आप इसको एसबिन नो लॉगिन है ना, तो आप यहाँ पर इसको या तो बैश दे सकते हो, ठीक है. दैट विल बी वन अप्रोच. अनदर अप्रोच विल बी we can check whether we have the edge node HDFS gateway is installed on this node or not, okay. So that will be another approach. So we'll try with the trying to install the gateway on this machine. Okay. Yeah, yes, yeah, Rohit. So okay, so yeah, there are two ways. Either we can add the gateway as well, or we can do the bin bash as well. Okay. So this is okay, but the bin bash method. Okay, I will go to bin bash method as well. Okay. So I have done it very long back. Let me try. So we need to first switch to the root. Then we need to go to etc password and search for HDFS. ठीक है, यहाँ पर आपका you can see यहाँ पर आप SBIN no login है ना, तो आपको यहाँ पर insert mode में you will type bin bash. Okay, it should work. I'm not sure. Let me try one. What I missed. I think it's bin bash. Let me try. Yeah. So bin bash हो गया. Now we are able to switch to HDFS. So sometimes we are like HDFS user don't have access directly. You cannot switch to HDFS user. So in that scenario, you can like configure your
etc password and control whether you wanted to. ओके सो दिस बिन नो सो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे यूजर्स के लिए नो लॉगिन है, ठीक है. सो नो लॉगिन मींस इट विल शो दैट यूजर इज नॉट अवेलेबल, ठीक है. तो बहुत सारे यूजर के लिए होता है. सो आई हैव डन दिस फॉर वन ऑफ द यूजर इन माय एक्सपीरियंस फॉर Uzi. सो वी वांटेड टू मेक सम चेंजेस फ्रॉम द Uzi यूजर. सो Uzi के लिए नो लॉगिन था. सो एट दैट टाइम आई रिमेंबर, सो वी हैव स्विच फ्रॉम दैट यूजर, ठीक है. सो इन दिस वे, so this is the one of the second, like this is a one of the real time issue, you can note it down. So now we have switched to HDFS user. Okay, now we'll try to connect to Spark shell. Okay, yeah. So sir, another method is like we can add the Spark gateway on this machine. Okay, so Spark gateway nahi hai na, so Spark gateway also will enable login for HDFS. Okay, now we'll try to connect the Spark shell. So I think it will give, it should give some more errors. Okay, let's see. I'm expecting some more errors. It will should not directly connect. It's better if you get the more errors, not so we can troubleshoot and it will be a learning for you as well. Yep, yeah, connected. So now आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले Spark context launch होता है. जैसे as I said, as soon as you connect launch a Spark shell, okay, or you connect to Spark, a Spark driver will be launched and a Spark context will be created. So you can see this highlighted line. Okay, so your Spark context is created and it is bound to port 4040. जैसे कि हमारे स्लाइड में मैंने बताया था कि very first port when you connect to Spark application it will bind to, या तो यहाँ पर ना सबसे पहले वो पोर्ट 4040 को कनेक्ट होगा. ओके, अब मैं अगर फिर से एप्लीकेशन लॉन्च करूंगा पैरेलली या फिर कनेक्ट करूंगा स्पार्क को, इट विल कनेक्ट टू 4041. ठीक है, सो विल सी दिस. ओके, मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली. लेट मी टेक अ डुप्लीकेट सेशन नाउ. 10 tasks. Now I'll switch to HDFS. ठीक है, now I will launch another Spark shell. नहीं रोहित, Spark server and Spark gateway on different node. हमने Spark gateway CM मशीन पे डाला और Spark history server हमने मास्टर नोड पे डाला है. ठीक है, ओके. देखो आप यहाँ पर आप कैन सी, देखिए मैंने सेकंड Spark एप्लीकेशन लॉन्च किया. ठीक है, यहाँ पर आप भी देख सकते हो. ओके, Spark UI could not bind on port 4040. ठीक है, अटेम्प्टिंग टू बाइंड ऑन 4041. ठीक है, तो 4041 पे क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है? क्योंकि हमारा एग्जिस्टिंग वाला एप्लीकेशन आईडी 002 इज कनेक्टेड ऑन द पोर्ट 4040. ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने दूसरा एप्लीकेशन लॉन्च किया, इट्स नॉट एबल टू कनेक्ट टू 4040. नाउ इट्स ट्राइंग टू कनेक्ट टू 4041. ओके, इट्स कनेक्टेड टू 4041 एंड ये एप्लीकेशन आईडी इज एंडिंग विद 003. ओके, सो ऐसे Spark context का एक सीरीज होता है जो it connect to the each port one by one. ठीक है, now let's try to understand another concept. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप कनेक्ट करते हो, it will show the like on which node it's Spark context has launched. ठीक है, it will give the application ID. तो हमारे केस में अब हम Spark on yarn यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो ये yarn का एप्लीकेशन आईडी देगा. ठीक है, एंड इट विल शो द वर्जन, विच वर्जन ऑफ स्पार्क और CDH वर्जन यू आर यूजिंग. ठीक है, नाउ विल ट्राई टू सी दिस एप्लीकेशन फ्रॉम द यार्न, बिकॉज हम स्पार्क ऑन यार्न रन कर रहे हैं. तो विल सी if we can access or we can view this application details from yarn. Okay. ठीक है, सो यू कैन सी यहाँ पे हमारे दो स्पार्क एप्लीकेशन है, 002 एंड 003. ठीक है, सो यूजर HDFS है, कौन सा एप्लीकेशन है, स्पार्क शेल है. ठीक है, सो ऑल दिस डिटेल्स इज देयर. ओके, सो एक रियल टाइम सिनेरियो क्या होता है कि बहुत सारी बार लाइक डेवलपर्स और यूजर्स क्या करते हैं, ये स्पार्क
शेल लॉन्च कर देते हैं एंड दे डोंट व्हाट यू से क्लोज इट और डिस्कनेक्ट प्रॉपरली। इसकी वजह से क्या होता है, जो रिसोर्सेस होते हैं ना बैकग्राउंड में यूटिलाइज होते रहते हैं। अब मान लीजिए मैंने और यहाँ पे मैंने सिर्फ अभी मैंने 2 स्पार्क एप्लीकेशन लॉन्च की थी, ठीक है, तो दोनों भी अभी रनिंग स्टेट में है, ठीक है। तो जब तक मैं इसको प्रॉपरली क्लोज नहीं करता हूँ, इट विल बी इन अ रनिंग स्टेट एंड इट विल ऑक्यूपाई योर यार्न रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिसोर्सेज परसेंटेज ऑल दिस एज अ नॉर्मल, जैसे हमारे स्पार्क यार्न का एप्लीकेशन होता है वैसे ही नॉर्मल एप्लीकेशन होता है, इट विल ऑक्यूपाई द रिसोर्सेज। सो अगर यूजर ने इसको प्रॉपरली किल नहीं किया ना, तो बैकग्राउंड में वो रिसोर्सेज कंज्यूम करते रहते हैं और क्या होता है कि समटाइम्स वी गेट द अलर्ट दैट रिसोर्सेज आर बीइंग यूटिलाइज्ड और application are running slow. So in that scenario, as a Hadoop admin, you need to check कि कोई बैकग्राउंड में स्पार्क एप्लीकेशन रन तो नहीं हो रहे। सो इन फ्रॉम दिस कंसोल यू कैन गेट इट टू नो। सो यहाँ पर क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन नेम होता है, तो यूजर कैन गिव दिस कस्टम नेम। अगर आप यूजर ने कोई एप्लीकेशन नेम नहीं दे रहा है तो इट विल शो दैट स्पार्क शेल, ओके। सो फ्रॉम दैट यू कैन get to understand that some of the application is not properly closed. So in this case what you can do is you can kill that application using the yarn kill command, as normally हम जैसे kill करते हैं ना yarn में, उसी तरह आप इसे kill कर सकते हो। but you need to like confirm that it's whether it's not in use or whether it's in use, okay। no that No, Bhakti, we cannot kill the application from the UI. We need to kill this application from the CLI only. Okay. Now let's move to another concept. ठीक है, हमारा yarn application we are connected to Spark Shell. Now I will show you that as soon as I like close this Spark Shell, this yarn application will be killed. Okay. अब आप देखो मैं refresh करता हूँ. There are 2 applications now. Now let me try to close one of them. I think exit से होता है, no exit नहीं, let me do it control D, yeah. So I have closed this one of the Spark session, okay। So when abhi it should be, this application should be finished or it will be closed, should be closed, okay। So let me try to refresh and see। आप देख रहे हो यहाँ पर ये वाला 003 वाला जो application है, it is now not in a running state, now it is finished, okay। So ठीक है, या प्रशांत, टू किल द एप्लीकेशन नॉर्मल वे इज यान, जैसे हम यान एप्लीकेशन किल करते हैं ना, यान एप्लीकेशन हाइफन किल एप्लीकेशन आईडी, तो सेम वे में वैसे ही किल कर सकते हैं, ओके। सो लेट मी चेक इफ आई कैन शो यू हियर कनेक्शन, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या हुआ हमारा, एक तो हमने प्रॉपरली क्लोज किया, ठीक है, और ये वाला हमारा अब नॉर्मली अबॉर्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ मेरा सेशन। अब यहाँ पर ये बैकग्राउंड में क्या होता है कि ये रनिंग स्टेट में ही रहता है, ठीक है। अब अभी यूजर वैसे कनेक्शन लूज हो गया तो ये रनिंग स्टेट में रहता है, यूजर अब उसको क्लोज भी नहीं कर सकता। मान लीजिए मैंने ये वाला टर्मिनल क्लोज भी कर दिया मेरा, ठीक है, ये वाला टर्मिनल क्लोज कर दिया, ठीक है। ये वाला तो यहाँ पर तो स्पार्क कनेक्ट ही नहीं है, ठीक है, फिर भी अभी भी यहाँ पे रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है। सो इन दिस केस एज अ एडमिन व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू किल दिस एप्लीकेशन आईडी, ठीक है। तो आप कैसे किल करोगे? सो kill yeah, kill -9, no sir, we don't use kill -9। kill -9 is used for the process id। linux पे जब हम कोई किल करते हैं ना process id, then in that case use the kill -9 directly, but we are trying to kill the yarn application, okay। तो yarn application कैसे किल करते हैं? if you have worked yarn application application id, मुझे लगता है मैं ही भूल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये एप्लीकेशन आईडी कॉपी करने दो, ये वाला, ठीक है। तो आई जस्ट रिफ्रेश, आपको बताता हूँ कि स्टिल इन अ रनिंग स्टेट, ओके। तो अभी हमारे पास कोई भी एक ही विंडो है, अभी कोई यान एप्लीकेशन हमारे पास रनिंग नहीं है। हाइफन किल एंड आई विल कॉपी दिस एप्लीकेशन आईडी, सो I'll copy this।
ठीक है। So let me try to kill. I'm not sure hyphen कहाँ पर आता है, so let me check. अभी दूसरा इशू आई थिंक आई थिंक दैट्स इट रिलेटेड टू यान। आई थिंक यहाँ पर यान क्लाइंट वगैरह कुछ नहीं होगा, so like skip it, that is not part of our this session. We can do it if you want, I can show it because but this is the command you can see. Okay, basically yarn application hyphen kill and then application id आप दोगे ना तो वो kill कर देगा, ठीक है। so maybe we can troubleshoot it but we'll skip because we need to cover other things as well, ठीक है। so यहाँ पे कोई इश्यू आ रहा है कि ये kill नहीं हो रहा है, तो मोस्टली ऐसा लग रहा है कि यहाँ इस वाले मशीन पे वी डोंट हैव द yarn client, ठीक है। so let's keep it running in the running step, ठीक है। let's move to another point. We already got late, ठीक है। so let's try to access this Spark history server. I will try to show you some of the what are the important tabs are there in the history server, okay। uh, here, the history server will get from here you can access things. Vikas, can you give me the public IP of this address 10.134? ठीक है। So yeah, meanwhile, so let's move to some other concepts, ठीक है। so यहाँ पर मैं let's try to submit a demo job, okay। हम यहाँ पे disconnect हो गए। now I will launch another Spark shell. so let me show you with the Spark. now we have checked the so similar जैसे Spark shell होता है, तो Spark shell में हम Scala by default it support Scala language. so similar for Python you can launch the Spark, okay। so I will connect to Spark, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे होता है। अब हम देखिए, अब हमारे पास ऑलरेडी वन एक एप्लीकेशन रनिंग है, ठीक है। सो इट इज नॉट able to connect to port 4040, ठीक है। इस attempted to connect to 4041, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वी आर कनेक्टेड टू Spark shell, ठीक है। now we'll try to submit our demo job here. yeah, thanks Vikas. 18081. So this is our Spark history server, ठीक है। हम इसको देखते हैं। let's try to first submit a demo job, then we will go through the Spark history, ठीक है। so first by Spark, let me see. No. ये एक सैंपल जॉब है, मैंने जो लास्ट सेशन में मैंने किया था। so let's try if we can run the same sample job. okay,
1 second guys, let me troubleshoot this coding part. ये work करेगा तो well and good, otherwise we'll try to submit the sample job. I think it should work now. Yep. ठीक है, तो हमारा sample job run हुआ, so we got some error, so let's try to troubleshoot what is this error. Okay, so mostly it's permission or some resource issue. Let me check what is that. No such file or directory. So let us troubleshoot for this error. It's a directory issue. Okay, so mostly यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर what I guess, so यहाँ पर हमारा यान का client machine नहीं होगा, I believe. Okay, let's go back. Let me check the logs once again and we'll confirm from the cluster. ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो edc hadoop conf cloud yarn topology file is not present. Okay, so I think it's looking for the yarn configuration file so that it can interact with the yarn, because we are running a spark on yarn. ठीक है, so yep. So हमने कहाँ पर हमारा edge node डाला, हमने edge node डाला हमारा CM machine पर, right? So we don't have yarn client. Okay, so हम will try to add the yarn client on this CM machine. ठीक है, so the yarn add role instance. ठीक है, so we'll add this on CM machine. यहाँ पर add करेंगे, okay, जहाँ पर हमारा spark gateway, यहाँ से हम try कर रहे हैं हमारी spark demo job submit करने का. Okay, we are getting issue here, so we'll trying to add the yarn gateway here. Okay, continue. Okay, so gateway is installed. Let's deploy client configuration. So guys, I'm assuming that this basic adding services you are aware of. That's I'm just not explaining. If you need to explain, just let me know. Okay. Okay, now let's try to resubmit our Spark job again. I think we disconnected from the Spark PySpark session. We are trying to connect again to PySpark. Okay. Now we are connected again. It's trying to now we can try to kill the yarn application as well, because we have added the yarn client machine ना यहाँ पर, तो हम एक बार वो भी ट्राई कर लेते हैं. ठीक है, सो ठीक है, चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं टू सबमिट दिस पाइथन जॉब. ठीक है, देन let's see what error we get this time. ठीक है, it's got okay, तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो स्टेप्स है वो कंप्लीट हो गया. ठीक है, now what I can submit before submitting the result, just go to web URL. Okay, we'll see history. So what other things we can see here. Okay, so Spark shell है. ठीक है, it's got disconnected. Now just try to calculate this pi value. Okay,
तो यहाँ पर हमारा देखिए पाई की वैल्यू इज रफली 1.60, ठीक है। तो दिस एप्लीकेशन वी गॉट द रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या इश्यू था, सो आई विल कॉपी पेस्ट दिस इश्यू, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। ठीक है। सो व्हाट वाज द इशू इज व्हेन वी फर्स्ट ट्राई टू सबमिट हमारा पाइथन जब हम सबमिट करने का ट्राई किया, तो यहाँ पर हमारे इस वाले मशीन पर यान एज yarn client machine नहीं था. So what is Spark? We are running Spark on yarn, okay. So Spark interact with the yarn, so Spark is not able to communicate with the yarn, and he is not able to read the configuration file कि yarn आपका कहाँ है, resource manager कहाँ है. So all this configuration details was not able to read by this application. So हमने इसीलिए क्या किया, हमने client machine install किया इस वाले node पर, ठीक है. So once we have added this, अच्छा है ये वाला ना, या तो इस वाले मशीन पे वी आर कनेक्टेड, वी आर अज्यूमिंग दिस 10.03 एज आवर एज नोड, ओके. सो वी आर कनेक्टेड दिस नोड. सो यहाँ पर हमारा यान क्लाइंट मशीन नहीं था, ओके, और वी कैन से यान गेटवे नहीं था. सो वी हैव एडेड द यान गेटवे. सो एज सून एज वी हैव एडेड द यान गेटवे, we were able to communicate with the yarn and our yarn application got successful, ठीक है. Now any question here, like कुछ पूछना है यहाँ पर? Yeah, I will just ping this script now only, okay. So one point you need to be note, okay, which I was missing, कि यहाँ पर यहाँ तक आपको एक स्पेस देना है, okay. उसके बाद then you need to again continue this line, okay. So there's a space you need to give. That's the thing I was missing. Okay. Now yeah, we'll try to kill the application. Okay, Amit, thanks for reminding. Okay. अब हम क्या करते हैं, let's try to exit. First of all आप यहाँ पे देखोगे ना, हिस्ट्री सर्वर पे जाते हैं हम लोग. बिफोर वी एग्जिट फ्रॉम हियर, यू कैन सी जैसे हम एग्जिट करते हैं हमारा एप्लीकेशन क्लोज होता है, ठीक है. तो व्हाट इज द एप्लीकेशन रनिंग, देयर आर टू एप्लीकेशन इन द रनिंग स्टेट. ये वाला देखिए, यहाँ पे देखिए, अब हम फर्स्ट टाइम व्हेन वी कनेक्टेड टू स्पार्क शेल, इट वाज शोइंग स्पार्क शेल application name, okay. Now we are connected to Python shell, so it is showing PySpark shell, ठीक है. So this way you can differentiate between the Scala shell or we can say Spark shell, ठीक है. So अभी हमारा ये जो PySpark shell है 005 वाला, ठीक है, ये रनिंग स्टेट में, ठीक है. You can see here state is running, okay. As soon as I will exit from here, this 005 should be in a finished state. So एक प्रॉपर कमांड्स होते हैं हर लाइक शेल से एग्जिट होने के. सो आई डोंट रिमेम्बर, वी कैन जस्ट गूगल इट. और सिंपली कुछ काम नहीं किया तो कंट्रोल टी कंट्रोल सी कंट्रोल डी दैट आई यूज, ओके. सो बट नॉर्मली वी शुड नॉट यूज दिस कंट्रोल सी कंट्रोल डी. सो समटाइम्स प्रॉपरली एग्जिट नहीं होता है, बट हर शेल के लिए एक अलग वे होता है. सो यू कैन जस्ट गूगल इट, ओके. सो फॉर नाउ जस्ट आई एम यूजिंग द शॉर्टकट कंट्रोल डी एंड कंट्रोल सी, ओके. सो मैंने एग्जिट किया. सो नाउ शुड 005 शुड बी finish and should be in finished state. Now you can see, okay, जैसे मैंने रिफ्रेश किया मेरा एप्लीकेशन फिनिश हो गया. सो ऑल द डिटेल्स एज नॉर्मल यान में टाइप स्टार्ट टाइम एंड टाइम, ठीक है, रिसोर्सेज यूज, ऑल दिस डिटेल्स यू विल एबल टू सी हियर, ठीक है. नाउ हमारा ये वाला जो एप्लीकेशन है 002 वो अब नॉर्मली डिस्कनेक्ट हो गया था, जिस वजह से अभी भी ये वाला एप्लीकेशन इन रनिंग स्टेट है. नाउ विल ट्राई टू किल दिस एप्लीकेशन, ओके. व्हेन वी अर्लियर ट्राइड दिस, so हमारा किल नहीं हो रहा था because we don't have the yarn client, yarn gateway here, okay. Now we have installed the yarn gateway, yarn application hyphen kill. Now I'll give the application ID. Actually I'm confused between the commands, so control C control D. In Mac we have the Mac Windows D ना, so I'm still confused. So ठीक है.
देखिए यहाँ पर हमारा, आप देखिए, इज इट विजिबल गाइस? देखिए यहाँ पर हमारा अब कब किल होगा, लास्ट टाइम एज ए सेड मे बी हमारे पास गेटवे नहीं है इसलिए नहीं किल हो रहा है, so that was correct. So we don't have the yarn gateway, that was we were not able to kill the application from this machine. As soon as we have added the gateway, we are able to kill. Now your application is killed 002. Okay, now अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ ना, now it's running still. As soon as the refresh should be in finished state. Okay, now sorry, it's in killed state because we have killed this application. ठीक है? Okay, any questions so far here? Okay, so let's move on to next point. We already got too late. ठीक है, so yeah, let's move on to Spark ST server. ठीक है, so we'll see the types of Spark ST server. ठीक है, हमारे यहाँ पे ST सर्वर है, तो बहुत सारे हमने एप्लीकेशन रन किए, तो we'll see the all the details. So we'll open one of the application. So यहाँ पे जैसे आप देखोगे, so as I mentioned, we can specify the location is spark.event.log with the help of this configuration spark.event.log directory, कि कहाँ पर आपको आपके स्पार्क हिस्ट्री और एप्लीकेशन का एप्लीकेशन डिटेल्स सेव करनी है. So you can see this details from here as well. देखो SDFS पर कहाँ पर है, यूजर स्पार्क एप्लीकेशन हिस्ट्री, यहाँ पर आपकी सारी एप्लीकेशन की डिटेल्स होती है. So consider a scenario that as an admin, because of some known issues, okay, you are not able to access the Spark web UI. Okay, आपका web UI access नहीं हो रहा, या browser issue, कुछ भी issue है. So from this location directly you can get the your application details as well. Okay, so as an admin you should aware of these things. What are the different ways of troubleshooting any application, like any issues. Okay, so यहाँ पर आप SDFS पे जाओगे, I will show you. अब यहाँ पर अगर मैं ट्राई करूंगा, तो आई थिंक यहाँ पर भी HDFS क्लाइंट नहीं होगा, सो माय कमांड विल नॉट रन प्रॉपर्ली. ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूजर स्पार्क एप्लीकेशन हिस्ट्री, इसमें मेरे पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन 002 03 04 05, जितने भी मेरी यहाँ पर दिख रही है ये वाली एप्लीकेशन, तो यहाँ पर HDFS लेवल पे भी I can view it. Okay, so this way you can access from CLI as well. Okay, so yeah, Akash will cover this. Spark streaming will require another session, Akash. So we already got too late, so maybe in the next session we can plan the Spark streaming. Okay, so let's move on to, let's stick to what is planned as of now. Okay, so let's open the 005. So यहाँ पे जो है ना important types you need to like remember is jobs, stages, storage, environment, executors. Okay, so very first when you open the Spark history server and its application, आप दिखेगा कि आपको jobs वाला टैब ओपन करेगा. ठीक है, jobs में बताएगा कि job 0, अब आप हमारे पास एक ही जॉब था इसलिए job 0. अगर आपका लॉन्ग रनिंग जॉब है it will show job 0, job 1, job 2. Okay, so basically job number will start from 0. ठीक है, so 0 1 so on. ठीक है, so in that jobs we have, if you click on this job, we'll move to stages. So stage 0, inside job 0 there was stage 0. Okay, inside that stage 0 we had 2 tasks. Okay, so 2 out of 2 tasks is completed. यहाँ पे दिख रहा है ना आपको 2 out of 2, means 2 out of 2 is successful. ठीक है, and once you click on this stage you will get the task details. ठीक है, तो task 0, task 1, yes, all these details, this task 1 is successful. ठीक है, and कंसिडर कीजिए कि आपका कोई टास्क फेल होगा या फिर आपका स्पार्क एप्लीकेशन फेल होगा, तो इन द केस आप क्या करोगे, पहले जॉब में जाओगे, जॉब में जाके देखोगे कौन सा जॉब फेल हुआ. ठीक है, उसके बाद उसमें कौन सा टास्क फेल हुआ, फिर उस टास्क सॉरी जॉब में कौन सा स्टेज फेल हुआ और उस स्टेज में कौन सा टास्क फेल हुआ. सो आप उस पर्टिकुलर स्टेज में आ गए, यू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर स्टेज इज failed. Okay,
सो अब यहाँ पर आप फाइंड आउट करेंगे कौन सा टास्क फेल हुआ। तो यहाँ पर आपको स्टेटस दिखेगा, स्टेटस सक्सेस सक्सेस सक्सेस। ओके, कंसिडर कीजिए आपका कोई टास्क फेल हुआ, तो यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा फेल्ड। ठीक है, तो व्हाट विल डू, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड एरर आएगा, स्टैंडर्ड आउट। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे कि लोग स्टैंडर्ड एरर, इट विल रीडायरेक्ट टू दिस योर यान। ओके, अब यहाँ पर हमारे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आईपी चेंज करना पड़ेगा। अभी ये इज यूजिंग द प्राइवेट आईपी, आई नीड टू गिव द पब्लिक आईपी, सॉरी पब्लिक आईपी। ओके, सो विल स्किप दैट पार्ट बिकॉज गिविंग आईपी विल टेक टाइम। तो बेसिकली आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि ये स्टैंडर्ड एरर है, वहां से आपको टास्क डिटेल्स मिल जाएंगे कि पर्टिकुलर टास्क क्यों फेल हुआ है। ठीक है, apart, okay, let's move to some other. Now स्टोरेज वाला टैब, स्टोरेज वाला टैब पे क्या होता है कि देख, we'll cover this storage tab in the last. Okay, we have a slide where I can explain what is the storage in the Spark. Okay, so let's skip for this for now. Let's move to environment tab. ठीक, environment tab में क्या होता है कि आपका जो पर्टिकुलर स्पार्क एप्लीकेशन है वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के साथ रन हुआ, कि जावा वर्जन, जावा होम, ओके, स्केला वर्जन, ऑल दिस थिंग्स रिलेटेड टू पर्टिकुलर स्पार्क एप्लीकेशन। सो वो सब आप चीजें देख सकते हो। तो ये वाला टैब कहाँ पर हेल्पफुल होता है, तो मान लीजिए आपने आपका ड्राइवर मेमोरी बढ़ाया, यू हैव, लेट मी फाइंड द ड्राइवर मेमोरी हियर फर्स्ट। चलो विल सी दिस ड्राइवर मेमोरी इन अदर, जब हम भी विल सबमिट अनदर एप्लीकेशन। तो मान लीजिए आपने कोई एक स्पार्क एप्लीकेशन नेम दिया। ठीक है, ठीक है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन नेम से यू कैन कंट्रोल द योर नेम ऑफ योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब यूजर ने क्या किया कि इसके application name change क्या for his Spark application. So from here you can confirm whether what the Spark application he has given or whether it's reflected or not. Okay. So मान लीजिए आप यूजर ने क्या किया, Spark shell के अलावा he has given some custom name. मान लीजिए he has given like Python test PyJob. Okay, Python testing PyJob. So अगर यहाँ पे अगर नहीं आ रहा है तो it means it is not reflected. Okay, so something to do with the configuration, or we can say the configuration not properly configured, or it is not picking up from the right hierarchy. So यहाँ से आप configuration confirm कर सकते हो, आपने जो अपनी job run की है उसकी what are the configuration. Okay, so we'll go through this once again. We'll submit some another job and I will give a walkthrough. Okay. अब उसके बाद होता है यहाँ पे एग्जीक्यूटर्स टाइप्स, कि आपके जो एग्जीक्यूटर्स है किस किस नोड पर लॉन्च हुए। ठीक है, सो ये वाला आपका कहाँ पर आपका ड्राइवर लॉन्च हुआ। सो आपका ये वाला जो आईपी है वेरी फर्स्ट, यहाँ पर आपका ड्राइवर लॉन्च हुआ। ठीक है, ये वाले दो नोड्स पे आपके एग्जीक्यूटर लॉन्च हुए। ठीक है, ये ऑल दिस डिटेल्स यू कैन सी एंड यू कैन सी द एरर्स एज वेल इफ यू फेस एनी इश्यूज रिलेटेड टू एक्जीक्यूटर। तो यहाँ से भी आपको स्टैंडर्ड आउट एंड स्टैंडर्ड एरर यू कैन व्यू इट। ओके, few of the pin. Krishna is asking where to check Spark logs for troubleshooting. Okay, yeah. So Krishna, दो तरह की ट्रबल शूटिंग, एक तो स्पार्क एप्लीकेशन ट्रबल शूटिंग है और दूसरा है कि खुद स्पार्क की ट्रबल शूटिंग है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको स्पार्क एप्लीकेशन ट्रबल शूटिंग करनी है तो आप ये वाले लोकेशन पे जाओगे। ठीक है, या अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल you'll try to check from web UI, अगर web UI is not working, in this case you'll check from the CLI के लिए आप यहाँ से ट्रबल शूट करोगे। ठीक है, that's one approach। अगर आपका स्पार्क इज नॉट वर्किंग, अब मान लीजिए आप एप्लीकेशन नहीं, खुद आपका स्पार्क इज डाउन है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए वायर लॉग में जाओगे। तो वायर लॉग से पहले डायरेक्टली वायर लॉग नहीं होता है, तो इन case like service to service, whether you are using
अपाचे स्पार्क और आप CDH यूज कर रहे हो या CDP यूज कर रहे हैं, तो हर कस्टमाइज्ड स्पार्क का एक अलग लॉग डायरेक्टरी होता है. सो बेसिकली वेयर लॉग होता है जहां पर आप जाके इसका लॉग चेक करोगे. तो यहाँ पर we'll try to see from here if you can get the logs. Okay, I think this the session disconnect हो गया. Yeah, this session is disconnected. Let me restart it. So यहाँ पर तो नहीं है. Amit, lineage पता नहीं to some of the application. So I cannot go beyond the point. Okay, so कुछ application install होगा उसका log directory होगा. So let me try to check with the Spark first. So where is that or is Spark? ठीक है. तो यहाँ पर ना where log जैसे मैं बताया कि ये यहाँ पर आपको लॉग्स दिखेंगे, बट इट्स नॉट आई एम श्योर बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि अलग डेडिकेटेड मॉन पॉइंट दिया जाता है लॉग्स के लिए इन द एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन. सो सिंपली वेयर लॉग में नहीं होता है. तो क्या होता है कि अगर आप देखोगे डेटा पॉइंट दिया जाता है और डेडिकेटेड डिस्क दिया जाता है जैसे डेटा 1 डेटा 2. ओके, तो इन दैट डिस्क दे क्रिएट द वेयर लॉग and inside that all the application logs will be stored. Okay, so अगर आपको एप्लीकेशन लेवल और व्हाट आई कैन से सर्विस लेवल पे ट्रबल शूटिंग करना है तो आप वेयर लॉग में जाओगे, और आपको एप्लीकेशन लेवल पे जाना है तो आप HDFS पे और पर्टिकुलर स्पार्क स्ट्री लोकेशन जो है ना उस पर जाओगे, वहां पे लॉग चेक करोगे, या फिर आप यहाँ वेब UI से चेक करोगे. ठीक है, तो लेट्स मूव टू ऑन द स्लाइड्स आर वी आर गेटिंग वेरी लेट. Okay, let's move on. Okay, so this parameters. So yeah, so I was saying yeah, so ये वाले parameters है, different parameters है. So let's try to submit another job. Okay, so एक और एक job submit करते हैं. We'll try to submit the job from the non-interactive shell, that is Spark submit. ठीक है, so हम Spark submit से एक job try करते हैं submit करने का. तो मेरे पास Spark submit वाला एक job है, but I think that's first we need to like realize Spark submit where it will submit up by Spark jar. Okay, so we need to first find out the location. This location where Spark Cloudera or CDH provide the parcels. Okay, for the pie job. First of all, we need to find out this location because ये location जो रहता है वो confirm नहीं होता, ये keep changing version to version, because earlier when I have shown the last time it was on 7.17. Okay, so this time हमारा version अलग है. So first of all we'll try to find out the location of this sample jobs. Okay, so sample jobs आपको कहाँ मिलेंगे? OPT Cloudera parcel. ठीक है, inside that you need to go to a version of your CDH. Okay, हमारा CDH version है 6. ठीक है, inside that leave the Spark library, inside that Spark, and inside that should be samples, I believe. Jars, yeah, jars. Okay.
यहाँ पे बहुत सारे jars है, fine. So if I am find out in this particular sample jar, there will be PySpark job. Okay, so I'm just looking for the sample jar. Some yeah, Tejas, we are in the example jars directory only, no? Okay, let me check. Yeah, ठीक है, yeah, यहाँ पर है. So as I said कि this jar will be change, this jar location will change. Okay, so we need to find out before it's finding. Okay, let me just copy paste. Location. यहाँ पर है हमारा. jar. So इस वाले jar में we have the Spark application. So PySpark jar. ठीक है. So let's try to submit it now. So this Spark submit is a non-interactive shell. मतलब जैसे कि हमने लास्ट PySpark में क्या क्या वन बाय वन हमारा लाइन ऑफ कोड कॉपी पेस्ट किया, ठीक है. सो इज टू वे कम्युनिकेशन. जब तक हमारा हम प्रिंट या फिर कोई एक्शन वाला परफॉर्म नहीं करते तब तक हमारा जॉब सबमिट नहीं होता है. बट इट इज इन दिस नॉन इंटरेक्टिव शेल और इन स्पार्क सबमिट आपको क्या करना पड़ता है, आपको यू नीड टू राइट इट डाउन योर कंप्लीट कोड. ओके, सो देन आफ्टर दैट यू नीड टू डायरेक्टली सबमिट. आप ऐसे नहीं कि वन बाय वन लाइन बाय लाइन राइट कर रहे हो फिर सबमिट कर रहे हो, ऐसे नहीं. आपको पूरा कोड ऑफ लाइन यू नीड टू मेक इन अ वन फाइल and that directly you need to submit. Okay, so along with submitting this job we are making some custom configuration कि master क्या होगा, मतलब client mode होगा या फिर cluster mode होगा, ठीक है. number of executors, driver memory, executor memory, number of executors. Okay, so we are making some custom configuration. Let's try to submit. Let's see how it goes. Prag, no, you don't. If you are going for admin, you don't need to learn the PySpark. Okay, but if you are going for development, it's well and good. It's up to you. So learning कभी खत्म नहीं होती. आप it's up to you. Admin के लिए it's not necessary, but basic understanding होना it's good, well and good कि कैसे submit करते हैं और कैसे trouble shoot करते हैं. So all this like connecting to Spark submit, Spark shell, it's a part of development only. But as an admin, you should know as a basic understanding कि कैसे connect करते हैं, कैसे develop टेस्ट करते हैं. या समटाइम्स क्या होता है कि प्रोडक्शन में कोई इश्यूज आता है, तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू आल्सो नीड टू सबमिट एट आवर एंड. ठीक है. Okay, let's move on. I think people are dropping because it got late, so I need to just rush. So, okay. Let's try. But okay. Good, we got one error. Let's see what the error is. Yeah, most of the nowadays PySpark is mostly used as compared to Scala. Okay, so because Python है ना, Python का आजकल बहुत डिमांड है मार्केट में, so mostly use Python. So if you are wanted to learn between Python or Scala, go for Python. Okay, so let's try to troubleshoot the error. What is exactly error we got?
Yeah, permission denied. Okay, okay. So that's also one of the good issue you can note it down, because I have submitted the job through the root user. Okay, so earlier जैसे हमने CentOS के through try किया था, तो same way में we have tried with the root, and you root don't have access of the HDFS. Okay, तो इसलिए ये job fail हो रहा है. So this you can in your use case of real time issue, just you can simply change the user. Instead of root, you can say that some XYZ user uh, wasn't having permissions on HDFS, and that it was failing with permission issues. Okay, let me switch to HDFS user. Okay, now let's try to submit this job. It's got submitted. It's been running. Instead, you can just note it down. Okay, this is our sample job. So आप जो भी what do you say, cluster use कर रहे, version use कर रहे, तो वहाँ पे first of all try to find out the location of this example jar. Okay, तो जैसे हमने find out किया of Cloudera parcel में जाके CDH version में जाके Spark lib Spark में. Okay, so version to version हो सकता है ये जो example jar है वो different location पे होगा. So as per your environment, just find out the location, then use this sample code. Okay. Okay, sorry. I will send this again. Okay. Now our Spark, this sample job is completed. Let's try to understand what are the things we can get it from here. Okay. Very first यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा वर्जन है. ठीक है, Spark running on 2.4. तो हमने जैसा देखा है अभी मार्केट में लेटेस्ट वर्जन है 3.3, but CDS 6.2 is providing Spark 2.4. ठीक है. Now if you move to go to, ठीक है, what is another important, यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन आईडी लॉन्च हुआ है. ठीक है, सो इन केस ऑफ ट्रबल शूटिंग मान लीजिए आपका यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी लॉन्च हुआ और एप्लीकेशन फेल होगा, so with the help of this application ID you can troubleshoot. Okay, so application ID, once the application ID is assigned to application, so will be able to view the logs as well. ठीक है, so यहाँ पर ट्रैकिंग URL भी मिलता है जैसे नॉर्मल यान एप्लीकेशन होता है सेम वे में. ओके, उसके बाद then what I can show you. Okay, let's move to this Spark history server and try to view what are the things we can view. Okay, so our application ID is ending is 007. Okay, so 0, let me try to refresh this. Okay, this is our 00. so यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Spark application का नाम क्या है, Spark Py, और आप यहाँ पे हमारा कोड देखोगे ना, ठीक है. सो हाइफन नेम, अब देखिए मैं जैसे बता रहा था, यू कैन कंट्रोल द योर स्पार्क एप्लीकेशन नेम एज वेल. सो बहुत सारे पैरामीटर है, बस अब एक पैरामीटर से आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हाइफन नेम. तो देयर आर 3 वेज यू कैन चेंज द कॉन्फ़िगरेशन. आप आर्गुमेंट पास कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन में दे सकते हो, या फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल पे भी दे सकते हो. सो लेट्स ट्राई टू चेंज विद द आर्गुमेंट. सो हाइफन नेम. सो व्हाट विल डू, विल सबमिट दिस जॉब अगेन. सो यहाँ पे देखोगे आप, पहले हमारा एप्लीकेशन नाम क्या था, अभी स्पार्क पाई. ठीक है, तो यूज सम अदर नेम फॉर आवर एप्लीकेशन. नाउ हाइफन नेम we give CloudAge. ठीक है, let's see this works. Maybe हो सकता है इसको डबल कोट लगे, first we'll try without quotes. So this submitting a job is it's not like a part of admin, but we need to understand, because we need to troubleshoot. Troubleshooting करने के लिए we need to know
how at a basic level users submit the jobs. Okay. Okay, yeah. So जैसे मैंने बोला शायद वो हाइफन नेम नहीं ले रहा है, so it might require, okay sorry, it is a continuation चाहिए इसको. First of all continuation is, ठीक है. Now let's try with the quotes. Okay, okay, got it. आप यहाँ पे देख सकते हो हाइफन नेम डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, तो ये वाला शायद आर्ग्यूमेंट इस वाले क्लाउड स्पार्क वर्जन में नहीं है. ओके, so we'll skip it. We need to like, हाँ, तो ये एक रियल टाइम इश्यूज आप ऐसे कर सकते हो कि पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट यूजर ट्राई कर रहा है सबमिट करने का और वो उसको एरर आए, दैट आर्ग्यूमेंट इज नॉट अवेलेबल. ओके, सो क्या होता है कि स्पार्क कुछ न्यू वर्जन में या पुराने वर्जन में वो पर्टिकुलर जो आर्ग्यूमेंट है वो डेप्रिकेट हो जाता है. तो यू नीड टू दैट ट्रबल शूट दैट एज वेल. ठीक है. कृष्णा इज आस्किंग स्पार्क रियल टाइम इश्यूज भी भेज लो आज. भाई ये रियल टाइम इश्यूज ही है ना जो मैं भेज रहा हूँ, उसको नोटेड डाउन कर लो आप बस. जो इश्यूज वी आर गेटिंग परमिशन इश्यूज, ओके, गेटवे इश्यूज, आप जस्ट दीज आर रियल टाइम इश्यूज ओनली, यू कैन नोट इट डाउन. ठीक है. सो ये वाला भी जो मैंने बोला कि आर्ग्यूमेंट इज नॉट अवेलेबल, कुछ जैसे यू नीड टू जस्ट एनालाइज फर्दर कि आर्ग्यूमेंट नॉट अवेलेबल, व्हाट वी नीड टू डू. जैसे मैंने बताया कि कुछ जैसे न्यू वर्जन आते हैं तो पुराने आर्ग्यूमेंट बिकॉज ऑफ सम रिस्ट्रिक्शन दे वो डिप्रिकेट कर देते हैं, या फिर क्या होता है कि कुछ न्यू पुराने वर्जन में नहीं होता है, वो न्यू वर्जन में होता है. तो लाइक दैट यू कैन चेक इट आउट. ठीक है. सो जस्ट स्किप दिस पार्ट एज ऑफ नाउ. सो यहाँ से हम आई वाज अबाउट टू शो दैट यहाँ से हम आर्ग्यूमेंट कंट्रोल करके हमारे एप्लीकेशन डिटेल्स और एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं. ठीक है. नाउ अगेन दिस इज हमारे जॉब से जॉब के अंदर स्टेजेस है, स्टेजेस के अंदर वो टास्क है. ठीक है. ठीक है. नाउ लेट्स ट्राई टू सर्च सम ऑफ द पैरामीटर. ठीक है. देखिए मैं जैसे बता रहा था, तो यहाँ पे देखिए आपने स्पार्क डॉट ड्राइवर में मेरे कितना दिया 512. ठीक है. तो यहाँ पे आप हमने जब जॉब सबमिट किया था हमारा कितना दिया था 512 MB. ठीक है. तो यहाँ से आप कंफर्म करते हो जो आप चेंजेस रिफ्लेक्ट करना चाहते हो वो रिफ्लेक्ट हुए या नहीं. ओके. तो अब हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ ड्राइवर मेमोरी 512 देने के बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं. विल ट्राई टू गिव दिस ड्राइवर मेमोरी एज 1 GB. ठीक है. तो मान लीजिए आपका ड्राइवर या एप्लीकेशन रन हो रहा है आउट ऑफ मेमोरी एरर, तो आपने एनालाइज किया, आपको पता चला कि यू नीड टू इंक्रीज द ड्राइवर मेमोरी. ओके. सो अब ये गुड प्रोडक्शन इशू, रियल टाइम इशू. क्या होता है कि यूजर टेस्ट करते हैं उसके जॉब को यूएटी डेवलपमेंट में. ठीक है. तो डेवलपमेंट में और यूएटी में 512 MB से तो जॉब चल जाता है, बट प्रोडक्शन में वो नहीं चलता है. सो व्हाट दे सजेस्ट टू यू एज यू आर एडमिन एंड यू हैव प्रोडक्शन एक्सेस, तो वो क्या बोलते हैं कि सेम जॉब को सिर्फ ड्राइवर मेमोरी इंक्रीज करके चला लेना. कि अब 512 MB है ना, यू इंक्रीज टू 1 GB. नाउ इन दिस केस यू नीड टू नो कि आप सेम जॉब को ड्राइवर मेमोरी इंक्रीज करके कैसे रन कर सकते हो. ठीक है. तो ये वाला मेरे क्वेश्चन आई ऑफन आस्क्ड इन माय मॉक कॉल एज वेल कि कैसे करते हैं. तो जस्ट यू नीड टू गिव दिस पैरामीटर्स. ओके, हाइफन ड्राइवर मेमोरी. अब कुछ और पैरामीटर मान लीजिए ये सारे पैरामीटर आप नहीं भी दे रहे हो, तो व्हाट यू नीड टू गिव इज हाइफन ड्राइवर मेमोरी एंड गिव दिस पैरामीटर. ठीक है. सो यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, आई विल सबमिट दिस सेम जॉब अगेन with the driver memory of 1 GB. Okay. Now let's go back. We'll open this again in another tab.
ठीक है, ये और हमारा नया वाला एप्लीकेशन है 008, ठीक है। तो I need to confirm as admin, I need to confirm whether these new configuration changes are reflected or not. What I will do, I will go to the environment tab, ठीक है। Then I will search for the parameter driver dot memory, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से देखा spark dot driver memory कितने मेमोरी लिया इसने, it has reflected 1 GB। पहले earlier when हमारे पास कितना था, driver dot memory was 512 MB। So like that you can make changes in the configuration, ठीक है। Okay, now let's move. So this one we have covered. Now we have covered this one different ways. So कोड लेवल पे कर सकते हो, आप जॉब लेवल पे कर सकते हो, जैसे हमने ये वाला देखा स्पार्क सबमिट से, ठीक है। कोड लेवल पे भी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन मेक चेंजेस इन द कॉन्फ़िगरेशन एज वेल, ठीक है। तो हायरार्की होती है, अगर हमारे इस पे कोड में नहीं है तो हमारे इसमें यहाँ पर, इसलिए यहाँ वाले इसमें पिकअप किया एंड इट इज द ड्राइवर मेमोरी हैज इंक्रीज, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या होता है, लाइक दिस लास्ट पार्ट आई बिलीव, दिस इज द लास्ट कंसेप्ट, विल देन कवर अप, ठीक है। तो जितना हम मेमोरी देते हैं ना एग्जीक्यूटर्स को, तो सारा मेमोरी यूटिलाइज नहीं होता है। मान लीजिए आपने स्पार्क डॉट एग्जीक्यूटर मेमोरी 5 GB दिया, ठीक है। तो सारा का सारा 5 GB आपके टास्क के लिए यूज नहीं होता है। तो इट गेट डिवाइडेड इनटू 4 मेजर पार्ट्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर एग्जीक्यूशन मेमोरी, स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, ओके। तो रिजर्व मेमोरी होता है कि एक अब क्या होता है, आपका जो एग्जीक्यूटर मेमोरी है वो एक कंटेनर के अंदर रन होता है, ठीक है। तो उस कंटेनर को रन करने के लिए एक मेमोरी होता है दैट वी कॉल एज अ रिजर्व मेमोरी, ठीक है। रिजर्व मेमोरी। उसके बाद तो एक होता है कि यूजर मेमोरी। so this user memory or reserve memory kind of like reserve for internal processing of container, ठीक है। ये ये एक्चुअल टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज नहीं होती है, दो मेमोरी, यूजर मेमोरी एंड रिजर्व मेमोरी, ठीक है। अब उसके बाद जो होती है ये एग्जीक्यूशन मेमोरी और जो स्टोरेज मेमोरी होती है दैट इज रिजर्व फॉर दैट इज यूज फॉर एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, ठीक है। सो इन दो मेमोरी में एग्जीक्यूशन मेमोरी और स्टोरेज मेमोरी ऐसे डॉटेड लाइन्स होती है, ठीक है। तो मान लीजिए अब क्या होता है, व्हाट इज स्टोरेज मेमोरी। अब जैसे वी डोंट स्पार्क यूजेस मेमोरी फॉर द प्रोसेसिंग, ठीक है। तो प्रोसेसिंग करने के ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेसिंग इट विल रिक्वायर सम मेमोरी टू स्टोर, ओके। जैसे कि डिस्क पर रफ फॉर डूइंग द rough work it use the some of kind of storage. So same way in memory as well it uses some kind of storage to so that it can store his data. So इसमें डॉटेड लाइन होती है। so अगर स्टोरेज कोई नहीं करना, अगर पर्टिकुलर टास्क डजंट रिक्वायर एनी स्टोरेज टू स्टोर एनी डेटा, so it will use complete this memory execution memory plus storage memory execution only, ठीक है। एग्जीक्यूशन अगर अगर मान लीजिए उसको कुछ स्टोरेज करना है तो इट विल इंक्रीज, ओके। यहाँ पे क्या करेगा वो स्टोरेज यूज करेगा, बाकी रिमेनिंग इट विल यूज एज एग्जीक्यूशन मेमोरी। तो ये इन दोनों के बीच में अलग शेयरिंग होती है, डिपेंड्स हाउ इट रिक्वायर। अगर स्टोरेज मेमोरी लग रही है तो एग्जीक्यूशन मेमोरी कम हो जाएगी, अगर स्टोरेज मेमोरी नहीं लग रही है तो एग्जीक्यूशन मेमोरी बढ़ जाएगी। तो दिस हाउ इट्स कैलकुलेटेड। तो बेसिकली आपको क्या समझना है, यहाँ पर आप देखोगे ना लास्ट वाले टैब में, आप जो एग्जीक्यूटर मेमोरी देते हो कंप्लीटली आपके टास्क के लिए यूज नहीं होती है, ठीक है। अराउंड 5% यू कैन से 5 to 6% इज अ रिजर्व मेमोरी, अराउंड 38% इज यूजर मेमोरी, ओके। सो आउट ऑफ दिस यू कैन से लाइक सिर्फ 50% आपके एक्चुअल टास्क के लिए यूज होती है, 56 है, बट for better understanding what you can say only 50% is used for actual execution of task, ठीक है। now what is that, ठीक है। so that's the concepts. I think we reached already reached the time. We'll cover up your question guys and we'll wrap up, ठीक है। so there are many points which I wanted to share but we already got late, okay। I can see people are dropping, okay। so just ask your question, then we can close it, okay। okay guys, we can continue as you wish, okay। so in continuation, इम्तियाज CLI हिस्ट्री बहुत लंबा है, what I okay will not be helpful for you, okay। so
Okay, let's continue. Okay, we'll cover few more points. Okay, so this one, so someone was asking, so कि ये स्पार्क मेमोरी कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये वाला यू कैन रेफर दिस, क्या होता है, आपने एग्जीक्यूटर मेमोरी लिया अराउंड 5 GB, ठीक है। तो इसमें एक फ्रैक्शन होता है, स्पार्क डॉट मेमोरी फ्रैक्शन एंड स्पार्क डॉट मेमोरी स्टोरेज फ्रैक्शन, ठीक है। ये एक डिफॉल्ट होता है, ठीक है। फ्रैक्शन इज नथिंग बट इज लाइक परसेंटेज, एक परसेंटेज दिया हुआ था कि इतना मेमोरी फ्रैक्शन रहेगा, इतना स्टोरेज फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेट स्टोरेज फ्रैक्शन एंड मेमोरी फ्रैक्शन आपके बाकी सब कैलकुलेशन होते हैं। तो आप अगर इस वाले कैलकुलेशन पे ये करोगे, तो मान लीजिए आपने 5 GB एग्जीक्यूटर मेमोरी दिया, ठीक है। तो 5 GB को अगर आप MB में कन्वर्ट करोगे, इट विल बी अराउंड 5100, राइट, 5120 MB, ठीक है। So out of this 5120 आपका क्या होगा, 300 MB एज अ रिजर्व मेमोरी रहेगा। तो वाई 300 MB, ठीक है। 300 MB जो है ना आपका रिजर्व मेमोरी रहेगा, ठीक है। उसके बाद यूजेब, जैसे बताया कि 4 सेक्शन है, रिजर्व मेमोरी, यूजर मेमोरी, स्पार्क मेमोरी एंड स्पार्क स्टोरेज मेमोरी। तो you for to calculate the user memory, first we need to calculate the usable memory, मतलब out of, अब ये आपका टोटल कितना हो गया, 5100 MB आपका मेमोरी है। उसमें से आपने रिजर्व मेमोरी माइनस किया, कितना आया, 4800, राइट, ठीक है। अब दिस 4800 मेमोरी से आप क्या करोगे, आप यूजर मेमोरी निकालोगे। यूजर मेमोरी कैसे निकालते हैं, यूजर मेमोरी इनटू 1 माइनस स्पार्क डॉट मेमोरी डॉट फ्रैक्शन। जैसे मैंने बताया कि स्पार्क मेमोरी फ्रैक्शन ये सेट होता है, ये परसेंटेज है, ठीक है। तो इन आवर केस द फ्रैक्शन इज 0.6, ओके। तो 1.0 माइनस 0.6, ओके, इट विल बी अराउंड 0.4, 0.4 इंटू 4800 MB, ये कि जो यूजेबल मेमोरी है ना, माइनस 300 MB करने के बाद, तो ये कितना आएगा, अराउंड 1900, okay, so 1900 MB will be your user memory, ठीक है। so 300 MB plus 1900 MB will be your like reserve memory plus user memory, ठीक है। इसी तरह जैसे अब स्पार्क मेमोरी और स्टोरेज मेमोरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूजेबल मेमोरी इनटू मेमोरी फ्रैक्शन, ठीक है। यूजेबल मेमोरी कितना है हमारा यहाँ पर, 4800 MB इनटू स्पार्क मेमोरी फ्रैक्शन कितना है, 0.6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया, कितना है, 2800 MB। तो सेम वे देयर इज अ कैलकुलेशन टू कैलकुलेट द स्पार्क मेमोरी स्टोरेज मेमोरी। अब स्टोरेज मेमोरी कैलकुलेट कैसे करते हैं, स्पार्क मेमोरी इनटू मेमोरी फ्रैक्शन। सो आपको ये याद करने या रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि एक फ्रैक्शन होता है, उस फ्रैक्शन के बेसिस पे आप जितना मेमोरी देते हैं उसको डिवाइड किया जाता है 4 पार्ट में। सिंपली आपको अगर समझ रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन स्किप दैट पार्ट। जस्ट रिमेंबर दैट कि उस मेमोरी का सिर्फ जस्ट 50% जो है एक्चुअल टास्क के लिए होता है, रिमेनिंग अराउंड 50, 56, 45% जो होता है वो रिजर्व होता है सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। ओके, एंड what things, Kamran is asking what is the compatibility version of Spark in CDS 6 and CDS 7? कंपैटिबिलिटी मींस कमन कमन मतलब सपोर्ट जो करता है ना, वो आपको मतलब गूगल पे मिल जाएगा कि CDS 6 के साथ कौन सा वर्जन आता है, CDS CDP 7 के साथ कौन सा आता है। सो आई कैन हेल्प यू टू गूगल एज वेल। यहाँ पे सिंपली करोगे ना गूगल की CDS 6 सपोर्ट मैट्रिक्स होता है। सपोर्ट मैट्रिक्स में ना आपको सारे मतलब CDS 6 के साथ या CDP 7 के साथ कौन से वर्जन का कौन से कंपोनेंट का कौन सा वर्जन आता है, ये सब यू कैन गेट इट, ओके। सो सपोर्ट मैट्रिक्स वी कैन रेफर इट, ओके। कंपैटिबिलिटी ये वाला जैसे बता रहे हो, तो CDS कंपैटिबिलिटी ये वाला इस पर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यस, सपोर्ट मैट्रिक्स, हाँ ये वाला इज वेरी गुड कि आपको यहाँ पर ना बस आपको वर्जन सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आप कौन सा CDP यूज कर रहे हो, ठीक है। क्लाउडा मैनेजर और CDP वर्जन पे आपको सेलेक्ट करना होता है, उसके डिपेंड पे आपके वर्जन डिटेल्स मिल जाते हैं। सो यू कैन गूगल इट आउट, ओके। सो इफ यू डोंट गेट इट जस्ट लेट मी नो। देखिए यहाँ पर जैसे ये वाला शायद है नहीं, ये तो
सिक्योर और इसका है। तो जैसे इस तरह ऐसे वर्जन होता है कि CDH 5.13 पे Hadoop वर्जन कौन सा है, विच वर्जन कौन सा है, ठीक है। तो ऐसे एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाते हैं, ठीक है। So you can find out, just if you don't, just reach out to someone or you can reach out to me. Okay. Sir, please the example according to architecture, what where RDDs are created and how job executed. ठीक है। So प्रसाद, RDDs के लिए ना, तो we have not हमने कोई सर जॉब सबमिट नहीं किया जहाँ पे हमने कोई RDD, तो RDD के लिए हमसे क्या करना चाहिए, एक डाटा लेना चाहिए। We should take a data and we should do some what is calculation on this data. हमने कोई डेटा नहीं लिया, हमने सिर्फ एक सैंपल PySpark कैलकुलेशन किया, इसलिए हमारा RDD क्रिएट नहीं हुआ। So now to create the RDD now, so we need a sample job where we are like creating dealing with some data. So let me check if I have any sample job where we can deal with some sample data. So as of now I don't have any handy job. So आप मे बी आप अगर गूगल पे करोगे ना, तो आपको मिल जाएगा कि आपको एक सैंपल डेटा आपको पुट करना पड़ेगा HDFS पे, एंड देन स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने PySpark पे यहाँ पे ये किया ना, सेम वे आप उस सैंपल डेटा को रीड कर सकते हो। Then you will able to see the RDD was created and you have processed that data. So as of now, unfortunately, I don't have this any data because हमको डेटा रखना पड़ेगा. It will take time. Okay, so we can skip for that. Yeah, Satish Kumar is asking how to build long running job in Spark. Okay, so Satish, so long running job, तो आपको पहले डिफाइन करना पड़ता है कि एक्चुअली उसको लॉन्ग रनिंग मतलब इज इट रिक्वायर्ड मोर टाइम, और अभी अभी से टेकिंग मोर टाइम। कंसिडर आपका एक जॉब है जो अर्लियर इट वाज टेकिंग 10 मिनट्स 15 मिनट्स, नाउ इट्स टेकिंग 2 hours 3 hours। ओके, सो दिस जॉब यू कैन कॉल इट एज अ लॉन्ग रनिंग जॉब। ओके, बट आपका स्टार्ट आपने एक जॉब रन किया, इनिशियली से वो 4 घंटे ले रहा है, तो इट्स नॉट कॉल्ड अ लॉन्ग रनिंग जॉब। ओके, अचानक से एक जॉब आपका ज्यादा टाइम ले रहा है, तो इन दैट केस यू कैन कॉल इट एज अ लॉन्ग रनिंग जॉब। तो लॉन्ग रनिंग जॉब में तो आपको कंसिडर करोगे कि इज देयर एनी चेंज, रिसेंट चेंज इन द कोड और इन द डेटा। अगर मान लीजिए आपका डेटा सडन इंक्रीज हुआ, पहले आप 1 GB डेटा प्रोसेस करते थे उस जॉब के थ्रू, नाउ यू आर प्रोसेसिंग 50 GB ऑफ डेटा, तो बट ऑब्वियसली इट विल टेक मोर टाइम। ठीक है, तो पहले आप कंसिडर करोगे कि कुछ डेटा पे चेंजेस आए क्या, डेटा इंक्रीज हुआ है क्या। अगर डेटा इंक्रीज हुआ तो बट ऑब्वियसली इट विल टेक मोर टाइम। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपका डेटा इंक्रीज हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसके रिसोर्सेज बढ़ाओगे, कि डेटा बढ़ेगा तो रिसोर्सेज भी बढ़ाने होंगे ना। तो सेम रिसोर्सेज लाइक पहले आप मान लीजिए एक नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर आपके 5 थे, तो उसी 5 एग्जीक्यूटर से थोड़ी 50 GB डेटा प्रोसेस करोगे, आपके डेटा 10 टाइम्स बढ़ गया, तो ऑलमोस्ट आपको सेम वे में आपको एक नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स भी बढ़ाने होंगे। तो आप अर्लियर 5 एग्जीक्यूटर्स यूज कर रहे थे, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स आप इंक्रीज कर दोगे। देखिए यहाँ पर एक जैसे हमारे पास है नंबर एग्जीक्यूटर कोर्स, ठीक है, नो नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर ये यहाँ पर, तो यहाँ पे आप मान लीजिए आप एक एग्जीक्यूटर से डेटा प्रोसेस कर रहे थे, तो आपका डेटा बढ़ गया, तो ये इंक्रीज दिस एग्जीक्यूटर नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स एट 10। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द अप्रोच। अनदर अप्रोच you might increase the driver memory, you might increase the executor memory। so ट्रायल एंड बेसिस पे आपको देखना होगा कि किस पे अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। तो ऐसा नॉट अ स्ट्रेट वे कि यही करना होता है, तो बेसिकली आपको देखना होगा कि क्या चेंजेस आए, उस चेंजेस पे बेसिस पे आपको रिसोर्सेज बढ़ाने होंगे। तो रिसोर्सेज इन द सेंस एग्जीक्यूटर, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर मेमोरी, एग्जीक्यूटर कोड, ड्राइवर मेमोरी, ड्राइवर कोड, ऑल दिस इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स यू नीड टू प्ले विथ। ओके, तो कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं होता है, लेकिन बेसिकली ये रीजंस होते हैं और ये पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके, Satish Kumar is asking, enabling speculative solution for long range job. Yes, Satish, one of the way to a long running job, but it's not definite. Okay, मैं जैसे बताया कि आपका जॉब भी अचानक आपका डेटा में इंक्रीज आया, तो ऐसा आप सिर्फ स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन एनेबल करके आपकी जॉब को फास्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि वो क्या करता है, बस एक टास्क को, स्लो रनिंग टास्क को, स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन क्या करता है, एक स्लो रनिंग टास्क है उसको डुप्लीकेट करता है। मतलब बट इफ यू हैव मल्टीपल स्लो रनिंग टास्क and if it will duplicate all these tasks, it will definitely going to take time. Okay, so it's not a right approach only enabling the speculative execution for the long running job. Okay. Okay, Prasad is asking, is driver and executor same memory or it takes atomically? Is driver and executor have same memory or it takes atomically as required?
So Prasad, driver and executor memory both are different. ठीक है, driver एक अलग चीज है. Driver as I said we is the master. Okay, executor is different. So there driver एक होता है हमारे cluster में, जैसे application master होता है वैसे driver एक होता है और multiple executors होते हैं. ठीक है. Anything else, guys? Yeah, SS is asking, share your production experience. How many executors you use? How much total heap memory you have? What you use by Spark? How many cores you need? So SS. So I don't like we don't remember कि exactly कितने executors होते हैं. वो जो आप पूछ रहे हो ना कि number of executors, it depends application to application. एक application नहीं होता है. तो production में होते हैं ना, thousands of application होती है और हर application अलग अलग executor और अलग अलग configuration से run होती है. So ऐसा नहीं होता है कि एक application है, मेरे पास 1000 application है और सारे application number of executors same रहेंगे, driver memory same रहेगी. तो depend कि हर application क्या कर रही है, तो number of resources और executors will be more and less. ठीक है. So same configuration भी हमें से याद नहीं रहता कि हमारा ये अलग एप्लीकेशन इतने हीप मेमोरी ले रहा है, इतना मेमोरी रिसोर्सेस ले रहा है, इतने नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स ले रहा है. सो हर एप्लीकेशन का अलग अलग होता है. ठीक है. व्हाट यू यूज पाइथन, सो डेवलपर पे डिपेंड करता है. डेवलपर क्या स्केला यूज कर रहा है, पाइथन यूज कर रहा है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम people now you are using python, so you people use PySpark. ठीक है. Krishna is asking, can we define max number of cores and memory each executor has and how? Yeah, Krishna. So जैसे कि हम बताएं कि डायनामिक एलोकेशन से क्या होता है, अगर आप डायनामिक एलोकेशन एनेबल करते हो तो यू कैन सेट द मिनिमम limit and maximum limit as well. ठीक है. Guys, we'll take 2-3 questions and we'll wrap up because it's already late. ठीक है. If you have seen, अगर हमने यहाँ पे ये वाला जो configuration होता है डायनामिक allocation enable, ठीक है, तो आप डायनामिक allocation enable करते हो, उसके साथ और एक configuration होता है मिनिमम एग्जीक्यूटर और मैक्सिमम एग्जीक्यूटर. ठीक है. तो मान लीजिए आपने मिनिमम दिया 10 और मैक्सिमम दिया 100. So in between 10 and 100 only you can assign the number of executors. You cannot assign more than 100. ठीक है. तो ऐसे जिस तरह using this dynamic allocation you can control the executor limit. Okay. This is asking as admin what we have to do related to Spark. Okay. So जो अभी तक हमने क्या है, ट्रबल शूटिंग इश्यूज जो है ना एज एडमिन, जो हमने अभी तक पूरे सेशन में किया वही हमको करना होता है. ठीक है. तो ठीक है कि स्पार्क इंस्टॉल करना, यूजर के जो इश्यूज आ रहे कि यूजर पे जॉब फेल हो रहे हैं, जैसे कि पता है कि यूजर हमने जो इश्यूज देखे कि यूजर डिनाइड इश्यूज, डायरेक्टरी इश्यूज, ओके, यूजर नॉट एबल टू लॉग इन, दिस काइंड ऑफ इश्यूज वी नीड टू डू. जैसे मैंने बताया कि परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की, जॉब ड्राइवर मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी एरर इश्यूज है, जॉब यूएटी और डेव में चल रहा है, प्रोडक्शन में नहीं चल रहा है. तो जैसे यूजर सजेस्टेड दैट रन द सेम जॉब विद द मोर रिसोर्सेज, तो हमको वही जॉब को मोर रिसोर्सेज कैसे रन करते हैं, increase the driver memory. So this playing with the Spark configuration is a kind of Spark admin job. Okay. Yakubi is asking where it will store garbage collection. So Yakub, the garbage collection, the storage ना, storage जैसे मैं बताया कि storage वाला पार्ट जो होता है ना, storage memory होता है. जैसे हमने यहाँ पर देखा ना at the our end of the slide, there is a storage memory. यहाँ पर होता है सारे स्टोरेज जो at the run time स्टोर किया जाता है. ठीक है. So this is a dedicated memory which you use at the runtime to store any runtime calculation or to use any storage level. Okay. Okay, guys. One last question. I'll take. Will drop. Okay. Asif is asking, in production we can change the permission for HDFS no login to bin bash. So yes, Asif, yes, it's depends कि आपके लेवल पे हो तो आप ऐसे चेंज नहीं, need to discuss with your team or your man, but if you are a senior directly change, because depend करता है आपके अंडरस्टैंडिंग पे, आप किस टास्क के लिए किस
किस टास्क के लिए कर रहे हो, ओके, तो आप इफ यू नो वेरी वेल व्हाट यू आर गोइंग टू डू, देन यू कैन चेंज इट, ओके, बट आपको आपकी कंपनी को आप पे उतना भरोसा नहीं कि आप इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो दे विल नॉट अलाउ यू टू चेंज इट डायरेक्टली। बट नॉर्मली हम नहीं करते बिकॉज क्योंकि एज नोट पे होता है हमारे पास, तो हमारा टेस्ट इन्वायरमेंट था इसलिए चेंज किया, बट इन प्रोडक्शन एज नोट पे सब कुछ होता है ऑलरेडी, एचडीएफएस होता है, yarn gateway होता है, all these things are properly set up, so we'll not require to change in production, ठीक है, because all the testing UAT dev cluster UAT cluster, ठीक है, इन सारे प्री prod ये सारे इसमें ये सब टेस्टिंग हो ही रहती है, तो we don't require to change it। अगर चेंज करना भी होता तो आपके रोल पे डिपेंड करता है कि आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, या फिर आपकी कंपनी कितनी हायरार्की फॉलो करती है, आप अकेले एक एडमिन हो, ठीक है, स्मॉल कंपनी, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है, तो डिपेंड्स योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। Okay, one last question, guys. I'll take, then we can close. Prasad is asking where it located and is permanent or temporary. क्या SSL in what, Prasad? Okay, cache memory. Okay, so locating cache memory, I'm not sure, Prasad, where we need to check. Neither I am not sure the use case कि आप cache memory को कैसे use case करेंगे. I need to check if required where we can check the cache memory. Okay, so it's like it's run time पे होता है, इसकी access करने के लिए ना, सिर्फ job के लिए होता है, so manually हमको कभी जरूरत नहीं पड़ती कि cache memory को access करें, ठीक है, so we access the logs, okay, but ऐसा cache memory access करने की हमें जरूरत नहीं होती है, but still I need to check if required how we can check it, okay. Okay. Okay, guys, we'll wrap up. I will share this commands. Okay. Once again, I have already shared the errors which we have gone through. So errors I think we have covered around 4 or 5 real time issues. Okay, आपने अगर अच्छे से ध्यान दिया तो real time issues का आपको कोई issues नहीं है, बहुत सारे real time issues we have already covered, ठीक है. So these are the 2 sample jobs which we have covered today. Sorry, this is the same. Sorry, I was planned to cover many things because of this cluster issues now. So I was a bit distracted. Okay, so I did not able to cover all these things. Maybe next time, inshallah, we'll cover it. Okay, remaining things. I was planned to show you the AWS Glue as well, but I'm running out of time. Okay, so sorry for that. Okay. Anything else? Okay, one more thing. I will just stop sharing my screen. I will. One second. I will share my LinkedIn profile. You can connect me. Okay, if you have any doubts, just let me know. If possible, I will try to address your queries. Okay.